Hi guys, in this video you will see how you can create high quality content for off-page activities in SEO and also to create high quality backlinks with the help of AI tools like ChatGPT. You need not to be a good blogger or a copywriter or a content writer to create content for off-page activities because ChatGPT will help you in this. Because ChatGPT will create a high quality content for your backlinks to drive more traffic to your website, increase your visibility and to rank faster on Google SERP. So instead of spending hours on research, outlining and writing content, you just create your content on ChatGPT with no delay. And yeah, if you want to learn more about AI tools and ChatGPT and want to get a 100% salary hike in your company, then Be10x can help you in this. You can join our AI tools and ChatGPT workshops, which are given by our professional trainers. Check out the link in the description. So let's get straight to the video. So like there are many off-page activities which we do in SEO, like social media bookmarking, directory submission, article submissions, classified submissions, social networking, websites पे हम links बनाते हैं, forum postings and all, press releases and all, and the list goes on and on and on. But the main thing which we do for backlink, that is classified submissions, from which we can get higher domain authority ratings, and article submissions and the blog postings. So in this video we will see how we can create our article content and classified content for the backlink. So let's write an article for B10x. तो आर्टिकल लिखने से पहले वी हैव टू कम अप विद द टॉपिक कि आप किस टॉपिक के ऊपर अपना आर्टिकल लिखने जा रहे हो. तो लेट सपोज हम अपना टॉपिक डिसाइड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एसईओ. लाइक शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं एआई इन एसईओ. ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया. तो वी हैव टू सी कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग कितने कीवर्ड्स हमें मिल सकते हैं, मतलब हमें थोड़ी सी इनकी कीवर्ड रिसर्च सॉर्ट ऑफ करनी है. तो देन कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, हम अपना यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एसईओ टॉपिक, एंड वी हैव टू सर्च फॉर मोर कीवर्ड्स. या सो द बेस्ट कीवर्ड रिसर्च जो हमको करनी चाहिए, लाइक वी हैव टू सी की व्हाट इज आवर कीवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी हैव टू सी की व्हाट आर द मंथली सर्चेस इट इज गेटिंग. ठीक है, सो ये है 1K से 100, 1K से 10K. तो देन वी हैव टू चेक द कंपटीशन लेवल ऑफ द कीवर्ड कि इट इज लो, इट इज हाई और इट इज मीडियम. सो समटाइम्स मीडियम पे हमें ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट होता है रैंक करने में, हाई गेट मोर डिफिकल्टी लेवल टू रैंक. सो वी शुड हैव टू टेक कीवर्ड कि जिसकी मंथली सर्चेस अच्छे हैं एंड द कंपटीशन लेवल इज लो. तो दिस इज द सेम कीवर्ड, लाइक इट रिजेंबल्स विद आवर टॉपिक, तो हम ये कीवर्ड ले लेंगे. देन वी हैव टू सी कि यूजर्स क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे इस कीवर्ड के अराउंड. तो लाइक हमने सर्च किया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एसईओ. देन सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एसईओ कि पीपल का इंटेंट क्या है. ठीक है, वो क्या सर्च कर रहे हैं. तो इन क्वेश्चन से पता लगता है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे. तो ऐसे इन पे क्लिक करके हम और टॉपिक्स निकाल लेंगे यहाँ से कि लोग और क्या क्या सर्च कर रहे हैं, लाइक ये रिलेटेड आ जाएंगे. ठीक है, सो आई थिंक वी हैव गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक. सो नाउ लेट्स कम टू द मेजर पार्ट. मेन आर्टिकल लिखने से पहले चैट जीपीटी पे हम चैट जीपीटी को प्रिपेयर करेंगे. हम उसको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि हमको किस तरह का हमें पूरा आर्टिकल चाहिए, हमें उसमें किस तरह का कंटेंट चाहिए जो हम सोच रहे हैं. हम इसको थोड़ा थोड़ा प्रॉम्प्ट देंगे. हम चैट जीपीटी को प्रिपेयर करेंगे हमारा आर्टिकल लिखने के लिए टू कम अप विद द बेस्ट रिजल्ट. सो यहाँ पे हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि आई वांट टू राइट आर्टिकल ऑन द कीवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एसईओ, डू यू अंडरस्टैंड. या सो उसने बोला कि हाँ हाँ ठीक है आई अंडरस्टैंड. तो हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं चैट जीपीटी को कि हम उससे क्या निकलवाना चाह रहे हैं. ठीक है, सो एज वी आर राइटिंग फॉर B10x, सो हम इसको ये भी बताएंगे कि व्हाट B10x डू. Like we are a company which provides workshops for AI tools. Do you understand? सो हमने ये भी बता दिया चैट जीपीटी को कि हम एआई टूल्स की वर्कशॉप देते हैं, तो ये उसके रेस्पेक्ट में भी कंटेंट जनरेट करके देगा हमको. सो हम इसको और इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमें किस फॉर्मेट में हमारा आर्टिकल पोस्ट चाहिए.
So हम टाइप करेंगे I want you to use all the normal formatting of a blog post including heading and bullet points. Do you understand? So like all these stuff we are doing here, we're just preparing ChatGPT to give us a perfect result. So now what we will do, जो हमने ये questions pupil also ask ये सर्च किए थे ये हम सब कॉपी कर लेंगे and we will write prompt here कि I want you to answer all these questions in the article. we just paste all the questions, then we write do you understand. So इसने कह दिया हाँ हाँ I understand your request blah 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 ठीक है. Then we have to give a main prompt to write the article. So now we will ask to it कि give me a blog outline for this article. So now as you can see कि इसने जो जो हमने पहले information दी थी all the questions and all the things तो उसके according इसने सब अपने outline में सब कुछ mention किया हुआ है. Now we will ask ChatGPT to write the final article. So yeah, this is finally complete. इसने पूरा title भी हमको design करके दे दिया. What can be the suitable title for the article, and then it has started writing पूरा article like adding all the headings, adding all the questions which we have asked to the ChatGPT earlier, and the main questions like the people are asking. तो इससे SEO का एक जो मेजर पर्पस है व्हाट आर द पीपल इंटेंट व्हाट दे आर सर्चिंग फॉर, ये भी उसका इंटेंट फाइनली कंप्लीट होगा इस आर्टिकल के थ्रू. तो ये हमारा पूरा आर्टिकल है ये पूरा कंप्लीट हो गया है. Yeah, so if we want to check plagiarism of this article, so we can check over here. There is a tool check plagiarism. We just have to make sure कि our article should be unique, not copied. This is a free tool and also you can check the plagiarism in Grammarly also. So as you can see, our content is 97% unique. So yeah, we can go with this content. So yeah, now we can go with this article. So now we have to publish or we have to post this article. There are plenty of websites like we can post on Medium, or we can post it on Tumblr, or we can post it on bloggers website. Now we will see ki how we can create a content for a backlink to submit that on the classified websites and all other backlink submission websites. So firstly, we have to do all these activities like search for keywords, and then check their difficulty level and their competition level, their average searches. Then we should go for, this activity. What are the LSI keywords? Like these are the LSI keywords for artificial intelligence in SEO. So जो भी कीवर्ड आप फाइनल करोगे उसका LSI keywords आप निकाल लेना. ठीक है. Like I have a keyword in my mind. Here it is, workshop on AI tools. So we have to create a backlink on workshop on AI tools. Like Be10x provide workshop on AI tools. So we have to generate a classified content for this keyword. So we have to give prompt to the ChatGPT key. We are a company which provides workshops on artificial intelligence. Do you understand? So हमने इसको information दे दी. Then we have to ask कि create a classified submission content for the keyword workshop on AI tools, and also we have to write CTA for the same. सो या यहाँ पे इसने पूरा टाइटल हमको डिजाइन करके दे दिया. सो या इसने एआई टूल्स को मेंशन कर दिया यहाँ पे, एंड इसने इस चीज का भी ध्यान रखा लाइक वी हैव टोल्ड दिस अर्लियर कि वी आर अ वर्कशॉप प्रोवाइडर कंपनी. तो इसने उससे रिलेटेड पूरा है कंटेंट जनरेट कर दिया, and this is a call to action for the same. Now we just have to do we just go on classified submission website, like we can go for Locanto, and there are plenty of classified submission websites. We can write a title over there, and we can go for with description and all the information which required, and we just write a call to action over there after the this information, and then we just have to submit.
So yeah, this is the fully optimized content for the SEO, which can surely give us the results. So that's all in this video. I hope you find out this video very interesting. Please make sure you check out our workshops. Links are given in the description. And make sure you follow our channel Be10x. Like this video, comment down your questions and all. Bye. This is Sahil Marana signing off. Jai Hind.